Good evening to all of you. Is this audible? Visible to all? All clear? All clear? So last class रे हमें discussion start करथिले on external sector गत काली रो क्लास रे आज डिस्कशन करबा हमें सोशल सेक्टर ना सोशल सेक्टर भितर कोन आसुच काह काह हमें सोशल सेक्टर बोली कहूचे सोशल सेक्टर भितर को फैक्टर आसे बा जदि म कहबी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें क्लासिफाई करि परिबा दी भाग रे गोटे हला फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे हला फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गोटे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रे कोन आसुची आ सोशल रे कोन आसुची सोशल आसुची हेल्थ एंड एजुकेशन सोशल रे कोन आसुची ना सोशल आसुची हेल्थ एंड एजुकेशन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रे कोन आसुची एठी रोडवेज रेलवेज वाटर सप्लाई हैला ये सब आसबे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बुझेला बुझ पाले गोटे कहली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गोटे कहली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ओके ताले हमें एई दीटा फैक्टर ऊपर आज देखिबा हेल्थ एंड एजुकेशन एको सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर बोली मध्य कहा जाय सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर बोली मध्य कहा जाय चलो ताले क्वेश्चन को आसीबा यस लोपामुद्रा करेक्ट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ये क्वेश्चन कौन दउची पढंतु प्रथम क्वेश्चन पढ़ कौन अच्छे समस्त करि परिबे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन इज ऑन एनएचपी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये 2017 नो पॉलिसी हेले मते या पर एबे भी क्वेश्चन आसे क्वेश्चन कौन दउची ये कहूची इट एम्स टू इंक्रीज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ जीडीपी proposes free primary care services and essential drugs for all introduces concept of health and wellness centers हैला ताले कोन बा भितरु डी ऑल करेक्ट डी ऑल करेक्ट यस गुड चलो नेक्स्ट with reference to Ayushman Bharat consider the following statements it provides health insurance coverage of 5 lakh per family per year it covers only workers in unorganized sector it is fully financed by the union government एटा देखो कौन हो इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख रुपीस ठीक अच्छी ओनली वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ओनली टर्म कही एगुड़ा सब डेंजरस टर्म ओनली जो देखिए भाविया पड़ो फुली फाइनेंस्ड बाय
Union government. Is it fully financed by union government? Is this fully financed by union government? ये पाखापाखी इंडिया 40% population, not only organic, not only unorganized sector, 40% of population covered, 40% of population covered. It is fully financed by union government? No, by state government also, by state government also. Hela? Provides health insurance coverage 5 lakh? Yes, 5 lakh coverage. Now second or third option wrong. Second and third option wrong. Yes, only dangerous. Then कौन होगा आंसर है? Answer, correct answer is 1 only. है? Next, consider following statements about IMR and MMR, infant mortality rate and maternal mortality rate. IMR and MMR, they have shown significant decline post 2005. 2005 पर एवढा reduce होइछन्ति. IMR reduction has been faster in rural area as compared to urban. India's current MMR is below SDG target. India's current MMR is below SDG target. कौन हो? ठीक है भाव ठीक हो. इंडिया करंट एमएमआर केते? एसडीजी टारगेट होची बिलो 70. इंडिया करंट एमएमआर होची बर्तन मोर देन 100. सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. एमएमआर रिड्यूस होची रूरल अर्बन बोथ, दीटार रिड्यूस होची. एमएमआर रिड्यूस होची रूरल एवं अर्बन बोथ, बट रूरल ने फास्टर हबो ना अर्बन ने फास्टर हबो? ऑब्वियसली अर्बन ने फास्टर हबो. कोन ऑब्वियसली अर्बन ने फास्टर हबो. हैला? So second option wrong. Now 8 first option is correct. 2005 onwards it is increasing or declining. Next is on NEP, new National Education Policy 2020. Introduced 5 plus 3 plus 3 plus 4 curricular structure. Higher Education Commission of India. Reservation policy removed in higher education. Which is correct? It by higher education. It higher education commission by higher education commission of India. And reservation policy removed by higher education. Now it देखिए समस्ते कहि परिबे. खाली स्टेटमेंट गुडा को देखिबा पई बड लागुछ. Kastur Rangan committee. Now reservation policy removed higher education. Now reservation policy टा को remove होई कि higher education. It has not been removed. So 3 option जोटी अछि त काटी दबो. 3 option B रे अछि कटि गला, D रे अछि कटि गला. 1 2 और 2 only are भितरे. Now 5 3 3 4 curriculum structure asichi, it was introduced, so this is correct. 5 3 3 4 curriculum it was introduced, so it is correct. Next, midday meal scheme was first introduced in Kerala in 1984. It is now a centrally sponsored scheme under Education Ministry.
It has been renamed as PM Poshan scheme. Midday meal scheme first Tamil Nadu. Very good point, Santi. Midday meal scheme actually it was introduced in Tamil Nadu. Kerala in 1984, but first introduced in Tamil Nadu. First in Tamil Nadu. Hela. Now this is correct and this is correct. ठीक अछि. Next. Which among the following is our objective of Samagra Shiksha Abhijan? Universalization of school education from preschool to senior secondary, holistic approach by subsuming Sarva Shiksha Abhijan, exclusive focus only on secondary education. देखो कौन हम देखो ये ओनली कोटी लागी छि गोटे एक्सक्लूसिव फोकस ओनली ऑन सेकेंडरी एजुकेशन. नाउ एटा कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जदि सर्व शिक्षा अभियान एवं आरएमएसए को सबज्यूम कर देला ताले एटा भूल हे जो 3 नंबर ऑप्शन भूल हे जो ये दीटा जदि मिसी गले सर्व शिक्षा अभियान ताले ओनली सेकेंडरी केमती हो हे परिबो कि 3 नंबर भूल हे गला ओनली अछि तो बर्तन करेक्ट के ना 1 एंड 2 करेक्ट के करेक्ट 1 एंड 2 करेक्ट हैला बुझिला global hunger index evaluates a country based on global hunger index. It is based on child wasting, stunting, mortality, undernourishment.
1 2 3 4 करेक्ट एग्रीड ऑल सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स टा ये एई फैक्टर गुडा को एक्युमुलेट करूछु मिसै की गणुछु नेक्स्ट with reference to NHM National Health Mission consider the following it includes both National Rural Health Mission and National Urban Health Mission accredited social health activist workers they are part of it free dialysis program is directly implemented under it which is correct गोटे प्रोग्राम अच्छी कही परिबे एटा कोन हो गोटे प्रोग्राम अच्छी प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम now yeah under a dialysis way not under NHM not under NHM हैला ठीक है 3 नंबर ऑप्शन भूल now NHM under रे it includes national rural health mission urban health mission एवं accredited social health activist ये गुडा सब करेक्ट ये गुडा सब करेक्ट ठीक अछि ठीक अछि consider following statements on RTE right to education act कि कोई पर एतरे which article was introduced RTE 2009 which article was introduced right to education and which constitutional amendment act and which constitutional amendment act कौन which 21 a very good point now come to the different options permits detention up to class 8 mandates 25% reservation for disadvantaged children in private unaided school provides free compulsory education to children aged 6 to 14 years now ये कहूँ it permits detention there is a no detention policy हाँ कि नहीं there is a no detention policy ठीक अच्छे चलो सो नो 3 नंबर टा भूल गला 3 नंबर भूल तुम कटि जीव किए बी सी डी कटि जाउची डायरेक्टली
free compulsory education 6 to 14 years age. It mandates 25% reservation unprivileged children manako pai unaided school. So 1 and 2 only, 3 जोटी अच्छी सब कटिगला. देखो केते सहज क्वेश्चन. Now once you know the elimination method टा जानिबा निहाती जरूरी. एलिमिनेशन मेथड को यूज करके अनेक गुडे पॉइंट बा अनेक गुडे क्वेश्चन रिजॉल्व करि परिबे. Which of the following program aims to provide nutritional support to pregnant women and lactating mothers? पोषण, पीएम मातृ वंदना योजना, आईसीडीएस. पोषण, पीएम मातृ वंदना, आईसीडीएस. वन टू थ्री ऑल करेक्ट. नाउ पोषण प्लस. ओके, ठीक अच्छे. सो ये सब गुड़ाक न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम, ये सब गुड़ाक कौन न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम. न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम. नेक्स्ट, एटा कले हम ए टाइप रो गोटे क्वेश्चन कले स्किप कर दो. Now next, NEP 2020 proposal includes 5 plus 3 plus 3 plus 4 curriculum, gross enrollment ratio in higher education to 50%, reservation policy in education is abolished. देखो NEP 2020 कौन कला, को फैक्टर, which of the following factors are correct? On 1 to reservation abolish पुन लिखुची ना, reservation not abolish, same point. Gross enrollment ratio टा को increase करियो 50%. Next, समग्र शिक्षा अभियान, it integrates सर्व शिक्षा अभियान and RMSA, covers preschool to senior secondary education, exclusively funds higher education reform. या PDF is available in the Telegram channel. Channel लु नहीं परिवे समझते. कौन हो बेटा? No, exclusively funds higher education कहूची, एपटे कहूची preschool to senior secondary school. तामाने 2, 3 they are contradictory statements. 2, 3 they are contradictory statements. ताले इट कौन लिखिवे? 1, 2 correct, 3 is wrong. 3 is wrong.
The midday meal scheme was started nationwide in 1995. First started as a pilot scheme in Tamil Nadu, now renamed as PM Poshan Abhijan. ଭଲ क्वेश्चन एटा करो। देखो एटा कोन हम करेक्ट एबे सब ठीक अछि। ए सेकंड ऑप्शन हम पढिले टिके समय पूर्व तमिलनाडु रे आरंभ होइतला बोली, ठीक अछि। नेक्स्ट, with reference to adult literacy rate in India, India's literacy rate is about 74%. Female literacy rate is above male literacy rate. Sakshar Bharat mission was launched in 2009 targeting women. समस्ते कहि परिबे no 74.4 74 same 74.4 and 74 both are same. Very good evening, Lija. ताले तो जानिए जो female literacy rate is above male literacy rate. Now this stands incorrect and it is less than male. Female literacy rate is less than male. Second option is wrong. Second जो अच्छी काटी दियो और लगे तो 1 and 3 correct. No, 1 and 3 correct. With respect to Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, it provides residential schooling to disadvantaged girls. It is a component within Samagra Shiksha. It provides free vocational education at college level. Now vocational education likhilani now doesn't provide vocational education at the college level. Third option is wrong. First correct and second correct. Consider following statements about SWAYAM initiative. SWAYAM initiative. Online platform for learning courses prepared by national coordinators like UGC and PTL. Foreign universities provide the course. In a simple question.
Now find out the dangerous keyword. Only कोटी अच्छी देखो एटा only foreign universities. Now 2 out 3 एमते भी contradictory. 2 कहूची UGT UGC NPTEL involve हेबे एटी कहलानी only foreign. So third is wrong. First is correct, second is correct. Next, UDISC Plus provides real-time data on school infrastructure and enrollment, data on higher education institutions, school-wise performance indicator at district level. Now again, पढ़िबो जदि याको जानि परियो 1 और 2 they are contradictory. Is there any contradictory statement मते कहले? Is there any contradictory statement? Contradictory माने एटा ठीक हेले सेटा भूल हबो बा एटा भूल हेले सेटा ठीक हबो. Is there any contradictory statement? Yes, contradictory कौन अछि? एटा देखो ये कहूची एटी data on school infrastructure एटी कहलानी higher education. Now 1 2 contradictory, 1 हेले 2 हबनी, 2 हेले 1 हबनी, so 2 हबनी higher education system. 1 out 3 correct. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान launched in 2009 to enhance access to secondary education. It has been subsumed under Samagra Shiksha, limited to provide scholarship for higher education. Marker, is there any contradictory statement? Is there any contradictory statement? कौन हो? ये कहूची it is limited to, again limited to is like only, limited to is like only, no ki? So this option is wrong, third option is wrong. Sarva Shiksha Abhijan was launched in 2001 for universal elementary education. At 75% funding from center, 25% from state, is now merged under Samagra Shiksha.
सर्वशिक्षा अभियान कौन हो बेटा? सर मोटिवेशन दरकार, फोकस आ एनर्जेटिक लागुनी। बढ़िया क्वेश्चन कर गोटे छोट जिनस कहबी एटा गोटे लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन हैला। एंड सबुठ इम्पोर्टेंट पार्ट व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मतलब कहले व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, आउटसाइडर्स और इंस्पिरेशन। मोटिवेशन शुड कम विद इन यू, कोड आसवा दरकार। मोटिवेशन कोड आसले बेटर, फ्रॉम इनसाइड यू और आउटसाइड यू। जदि मोटिवेशन जो सोर्स आणुचंदी से सोर्स आपन को मैनिपुलेट करे, ता निज हिसाब रे यूज करे, देन यू विल बी मिसयूज्ड or you will be misguided. So what I will advise in this regard, you yourself should be your motivation. You decide ki I have to prepare for 1.5 years or 2 years for this examination. This is a long run examination, not a one day exam. गोटे दिन रे परीक्षा हो जाउनी बा गोटे दिन रे सरी जाउनी, मो कथा बुझछन्ती कि नै? ताले इंस्पिरेशन ता कोट आनिले बेटर। आ ये परीक्षा ये हस मजाक रा किछि परीक्षा नुहे, एमती एते सहज नुहे। एते सहज हेतु त के भी हेजु ओएसआईएस के भी परीक्षा दे देबे आ पाइ जेबे। नाउ एटी प्रिपेयर हवा कष्ट, पढिवा कष्ट, प्रीलिम्स क्वालिफाई करिया भी कष्ट, मेंस क्वालिफाई करिया भी कष्ट, लिखिवा आंसर भी कष्ट। दिस इज अप टू यू, हाउ यू already 3+ years. Why 3+ years? Where is the mistake? First find out whether you are guided properly or misguided. Misguided हेले किछि सेमती टाइम ही वेस्ट होतु आ किछि लाभ होवा, बुझिउ कि नै? तो एते दिन धरि कि जदि प्रिपेयर हो, फर्स्ट फोकस्ड हो कि नै मते एते दिन पढिवारी अछि। This is the most important part. Second most important part is your source, your guide, your mentor. कौन पढ़ुचंती, केति की पढ़ुचंती, कौन पढ़ुचंती इज नॉट इंपोर्टेंट, रादर कौन न पढ़ुचंती इज इंपोर्टेंट। कौन कौन न करिवे दैट इज इंपोर्टेंट, कौन करिवे दैट इज नॉट इंपोर्टेंट। कौन कहली कौन कौन न करिवे से गुडा सब इंपोर्टेंट हैला। तो यार गोटे डूज एंड डोंट्स बनाओ निजे निजे, अदरवाइज सेमती ट्रैप भीतर पसियो। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जो साइकिल अछि, जो ट्रैप अछि, से ट्रैप भीतर पसिक रहितो। इंडियन फिलोसफी अनुसार जो जन्म मृत्यु साइकिल भीतर पसिक रहितो, निर्वाण प्राप्ति बा मोक्ष प्राप्ति केबे भी हबनी, परीक्षा क्वालिफाई करि परिबनी। सो फर्स्ट डिसाइड करो कि मते कोन करिवार अछि, एंड ओवर डिपेंडेंट होनी का ऊपर। वंस यू बिकम ओवर डिपेंडेंट, दे विल मिसयूज यू, मिसगाइड करियो। एंड वंस मिसगाइडेड, ये परीक्षा केबे भी क्वालिफाई करि परिबनी, मन रखो। आज कल तो सब मिल जाउची सहज रे मिसगाइड करिया पे। देयर आर लॉट ऑफ वेज, लॉट ऑफ सोर्सेस, फ्री ऑफ कॉस्ट अनेक सोर्स मिल जाउची। ऑथेंटिकेट और लेजिटिमेट जिनस पाइबा, ऑथेंटिकेट लेजिटिमेट नॉलेज, ऑथेंटिकेट लेजिटिमेट रिसोर्स जानिबा, इट इज डिफिकल्ट। बुझु ना? इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि मु व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सेप्ट। अदरवाइज बुझ पारथि अवश्य ता ऊपर डिस्कशन करनी। सो एती कहबी, ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन मन दे कि पढंतु, फोकस रुहंतु, निजे निजर गोटे रूटीन बनांतु, चेष्टा करंतु टाइम भीतर पाठ सारिया पई, सिलेबस अनुसार पढंतु, सिलेबस बाहर को जानतु। व्हाट एवर इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, लीव इट। जहां भी एनी पर्सन, एनी बुक्स, एनी मटेरियल, एनी रिसोर्स, व्हाट एवर इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जस्ट लीव इट। ता सहित आपण रहिबे तो इट विल वेस्ट योर टाइम, इट विल वेस्ट योर एंटायर लाइफ आल्सो। बुझि परछन? मॉक रे 100+ रहउतला बट क्वालिफाई, व्हाई मॉक रे 100+ बट क्वालिफाई होनी काहे कि? नाउ एग्जाम रे 100+ रखले तो क्वालिफाई हो, 90+ रखले तो क्वालिफाई हो, काहे क्वालिफाई हो? यू फाइंड आउट द मिस्टेक योरसेल्फ, बिकॉज़ नो वन नोज यू बेटर देन यू, नो वन नोज यू बेटर देन यू। निजर स्टैमिना कोन, निजर पोटेंशियल कैपेबिलिटी कोन, केवल निज को ही जाना अछि। तो गोटे थर सेल्फ असेसमेंट करंतु कि काहे कि एग्जाम क्वालिफाई करि परनी, कोन कहली काहे कि एग्जाम क्वालिफाई करि परनी। ए जो इंटरव्यू प्रोसेस चलीथिला, सेतर गोटे छोट जिनस मुझे इंटरव्यू कैंडिडेट मान को तार अर्थ कौन, इंटरव्यू माने कौन, निजर इंटरनल व्यू, निज को निजे व्यू करबा। चारिटा इंपोर्टेंट फैक्टर जोटी देखा जाए,
कौन कौन ओडिया रे कहूँ क्लीयरली गोटे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारिटा फैक्टर को जदि कंट्रोल करि पारुचंदी ताहले ये परीक्षा को क्वालिफाई कर मन रखु लिखिक नि कौन कौन कहली मन बुद्धि चित्त अहंकार है यार मीनिंग निजर माइंड निजर नॉलेज केतिकी नॉलेज एक्वायर करेंगे केतिकी करेंगे निजर कॉन्शियसनेस एंड निजर इगो गोटे क्वेश्चन परीक्षा होनी हाँ कि नहीं गोटे क्वेश्चन हो सही क्वेश्चन ने ही फोकस करके रही सेल्फ इगो हट जाऊँ कि मुझे करें क्वेश्चन पॉलिटी मोर फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट केते क्वेश्चन करते लीव दैट क्वेश्चन who wants you to solve all the 100 to 100 questions it is not required at all now you score 50 plus 60 plus questions you make it correct you will qualify 50-60 टा करियर अछि 100 को 100 तो करियर ही नहीं now you have to show your potential in mains examination मेन्स ପାଇଁ प्रिपेयर हुंतु प्रॉपर्ली मेन्स ପାଇଁ पढंतु प्रॉपर्ली बुझछन कि नहीं मो कथा मेन्स ପାଇଁ प्रॉपर्ली पढंतु आंसर राइटिंग करूँ यूनिक आंसर लिखा चेष्टा करूँ दैट विल गिव यू मार्क दैट विल गिव यू रैंक दैट विल गिव यू गुड कैडर OSFA ORSFA OPSC that means mark will give you a cadre so focus on your mains preparation more now prelims 50 days you prepare properly you will qualify basic understanding जदि अछि 50 दिन properly पढंतु definitely you will qualify हैला तो फोकस्ड रहिबा मोटिवेटेड रहिबा नाउ इट इज अ सेल्फ टास्क निजो को करिया पड़ियो एंड टू सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन देयर आर मेनी क्लासेस बीइंग कंटिन्यूड हियर नहीं हमें अनेक गुटे क्लास करूचंती एटी सप्लीमेंट करिया पे प्रिपरेशन को अनेक कोर्स अछि बट इंपोर्टेंट पार्ट इज वेदर यू आर फॉलोइंग द राइट ट्रैक और नॉट वंस मिसगाइडेड फॉर लाइफ टाइम मन न कहे कथा आउ परीक्षा क्वालिफाई करि परिबेनी प्रॉपर रास्ता रहंतु फिक्स सोर्स जति लक्ष्मीकांत बही पढ़ियार अछि पॉलिटी पाइन डोंट गो फॉर अ सेकंड चॉइस सेकंड ऑप्शन लक्ष्मीकांत ही पढ़ियार अछि शंकर आईएएस पढ़ियार अछि एनवायरनमेंट पाइ केवल सही बही मु पढ़िबी बारंबार पढ़िबी एति कर परीक्षा क्वालिफाई जो एटा किछि बड़ परीक्षा नुहे जो माने इंटरव्यू दउचंती आज किछि कैंडिडेट इंटरव्यू देबा को एटी ओपीएससी आस्तिले इंटरव्यू सरला पर आस्तिले मते भेटिया पाइ तो से माने कहउतले ताकर कोन कोन माने लास्ट एटा उतर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट से चार थर इंटरव्यू देला एंड क्वालिफाइड ग्रुप बी रे अछि फर्स्ट क्वालिफाइड ओएलएस लेबर सर्विस सेकंड टाइम देला ओआरएस देन फर्स्ट टाइम एबे लास्ट टाइम एबे लागि छि ओएस को जिवा पाइ नाउ फॉर अ लॉन्ग टर्म दे आर प्रिपेयरिंग बट आई हैव एडवाइज्ड कि आफ्टर 2 इयर्स यू स्टॉप प्रिपरेशन फॉर ओपीएससी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी हैना सी सोनो से लागि छि ओएस पछरे ना ओएस पछरे लागु लागु सेट आईएएस टा हाथ पळेबो बयस पळै बुझी बुझी तो प्रॉपर डिसीजन नियंतु प्रॉपर टाइम रे नियंतु आउ कोन सुनिया चाहू को नो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम कोन फेस करछन एग्जैक्टली कोंतु मु कहबी तार आंसर सॉल्यूशन नाउ जेतेटा क्लास अछि सब क्लास आरंभ रो मु कहे कि मो काम होची पाठ को इजी करबा पॉइंट 1 मो काम होची मेंटर यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होची यू जस्ट ओबे व्हाट आई एम सेइंग को वे डायरेक्ट करछु से वे पढंतु इफ यू डोंट क्वालिफाई देन आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी हुआ जाए अपन जो क्वालिफाई कर जिवे देखिए केते लोग आसीबे क्लेम करिया पई कि यू आर माय स्टूडेंट और टीचर कहबे इंस्टीट्यूट कहबे बही वाला कहबे समस्त कहबे कि यू आर माय स्टूडेंट घर वाला भी कहबे कि मोर सपोर्ट पई ये क्वालिफाई करि वाला हैला हस्बैंड की वाइफ जदी मैरिड कहबे कि मो सपोर्ट रु पाई गला नाउ सिबलिंग्स दे विल स्टार्ट क्लेमिंग नाउ रिमेंबर वन पॉइंट इन लाइफ सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेल्योर हैज नो क्लेमेंट आपण को सक्सेस को क्लेम करिया पई 100 लोक आसी जिवे कि मो पई ये सक्सेस पाई मु पढ़ैतिली सक्सेस पाइला मो क्लास करतिला सक्सेस पाइला मु ताको खाइबे को दोतिली सक्सेस पाइला मु ताको पैसा दोतिली प्रत्येक मास रे सक्सेस पाइला मु ताको मेंटल मोटिवेशन करतिली ताको मेंटल साउंडिंग कंडीशनिंग करतिली तार से मो पई पाइला नो एवरीवन एंड प्लीज रिमेंबर द एंटायर वर्ल्ड इज सेल्फिश रिमेंबर दिस वन द एंटायर वर्ल्ड इज सेल्फिश now if you qualify there is a condition there is no unconditional love there is a condition if you qualify then I will take the responsibility समस्त आसी फुल तोड़ा धरिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ना पाई हां कि नहीं कोन क्वालिफाई कला पर समस्त आसी बट फेलियर जेतोले फेस करथि सेतोले पाकर केही नथि एका ही फेलियर फेस करथि बुझिउ कि नहीं ना जदी
मु गोटे जिनस कहे जदि प्रिपेयर हम एका जदि फेल्योर पाई लड़ब एका निजे तले पड़ला बेले पड़ो एका पुणी आउ थे रिबाउंड कर उठब एका ताले सक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेस क्रेडिबिलिटी आउ क्या कहीं दब निजे कहीं न रख जदि प्रिपेयर निजे एका जदि निजे स्ट्रगल को फेस कर देयर इज नो वन टू शेयर योर स्ट्रगल समय जदि पाखरे कहीं नहीं हाथ धरी उठा तले पड़ला बुझुंट कि नहीं ताहले क्रेडिट कहीं देवे क्या निज सक्सेस हाँ कि नहीं मत कहते सो कहिबार अर्थ निजे प्रिपेयर हूँ निजर मेंटल कंडीशन को ठीक रखु क्या निर्भरशील हूँ एवं से मानकटू दूर रुहतु जो माने आपणकर शत्रु आपन कहि बर्तन शत्रु किए नो इट दिस इज नॉट अ वार ग्राउंड नॉट इजराइल पैलेस्टाइन वार नॉट रशिया यूक्रेन वार मु कहि रशिया इज द एनिमी फॉर यूक्रेन यूक्रेन इज एनिमी फॉर रशिया इजराइल एनिमी टू पैलेस्टाइन बा इंडिया पाकिस्तान मु कहि परिबिन पाकिस्तान इज एनिमी टू अस इंडिया बट एठी हु इज द एग्जैक्ट कल्प्रिट किए शत्रु आपनकर जे आपनको प्रिपरेशन में बाधा दउची से शत्रु जे आपण गोल डायरेक्शन में गला बेले एग्जाम क्वालिफाई करियो गला बेले जे बाधा दउची से शत्रु नाउ सी को भी रूप आसी पारे डायरेक्ट एनिमी हे पारे इनडायरेक्ट एनिमी हे पारे डिस्गाइज्ड एनिमी हे पारे आपण सांगर रही पारे मे बी ब्लड रिलेटिव हे पारे मे बी स्पाउस हे पारे मे बी केही हे पारे आपण से फ्रेंड हे पारे बट जदि जने पुश करूची आगो को जीवा को जने पुश करूची टुवर्ड्स द सक्सेस इंटरव्यू क्वालिफाई करिया को प्रीलिम्स क्वालिफाई करिया को मेंस क्वालिफाई करिया को मो हिसाब रे से ही फ्रेंड एवं हु इज पुटिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन जी ऑब्स्ट्रक्शन पुट करूची आपण एग्जाम क्वालिफाई करिया पे से एनिमी तेणु कि तार वैल्यू किछि भी और व्हाटएवर मे बी द रिलेशन irrespective of the relation that person is an enemy for you and because of that person only or because of that environment only you are not going to crack the exam बुझ परछन सो फेलियर रेस्पॉन्सिबिलिटी जे नौचे आपनकर से ही आपनको फ्रेंड से ही आपनको कोऑपरेट करछि सपोर्ट करछि एग्जाम क्वालिफाई करिया पई नाउ निजे भाबंतु फेलियर रेस्पॉन्सिबिलिटी केते जण नौचन निजे कोंतु फेलियर रेस्पॉन्सिबिलिटी केते जण नौचन हला नाउ रिलेटिव्स फ्रेंड्स केते स्टूडेंट अछंती जो माने सोशल फंक्शन जेमति कि मैरिज बर्थडे पार्टी एगुडा अटेंड करि पारु ना कहीं ना जीवा मात्र के क्वेश्चन आसीबो कि कौन करूचंती हला कि गोटे कमेंट मार दबो कलेक्टर बाबू आसी गले ई सरकारी चाकरी आसी गले ई तहसीलदार मैडम आसी गले चेयर दियंतु तांको बसिया पे आपन खराब लागियो कहीं ना से आपन प्रिपरेशन न मकेरी करूची आपन एंटायर पोटेंशियल ऊपर से लोकटी क्वेश्चन करूची केते लोक अछंती केते स्टूडेंट अछंती से माने जाई परना सोशल फंक्शन अटेंड करि परनांती एई डर रे एई भय रे बा एई लाज रे कि एग्जाम क्वालिफाई कलु जो दिन एग्जाम क्वालिफाई आउ किछि लोक थिबे से माने सुनिया पई खुशी भी कि यू हैव नॉट क्वालिफाइड हां कि नहीं किछि लोक थिबे इंटेंशनली से माने सुनिया को चाहथिबे कि आपण क्वालिफाई करिनाते एवं सेटा सुनिले से माने को खुशी मिलिबो आत्म तृप्ति मिलिबो बहुत कम लोक थिबे जो माने आपण सक्सेस रे खुशी हेबे बहुत कम लोक थिबे जो माने आपण सक्सेस रे खुशी हेबे सो बाहर वर्ल्ड को निजर स्ट्रेंथ देखांतु निजर वीकनेस नहीं कांदिले कौन हो कांदिवार अच्छी घर भीतर कबाट दियंतु कांदंतु बाहर गला बेल को स्ट्रांग हेकी जीवे तो निजर पर्सनालिटी को निजर स्ट्रेंथ को एते तळे पकांतुनी कि समस्त चढ़ी चकड़ी की पळेबे ता निजर स्ट्रेंथ को एस्पिरेशन को पर्सनालिटी को एते ऊपर रखंतु कि समस्त को सेही पर्यंत जीवा को भाबिया पड़ियो देखिए तो गोटे बड़ बिल्डिंग रे कि थिबो 2-3 महल रे से तळ लोक ऊपर टेकाटे पकई दे पारिबो किंतु से ऊपर जो एरोप्लेन जाउची ता कोन टेका पकई पारिबो कोनादी से चेष्टा कले भी तो टेका पकई पारिबो तार ऊपर से टेकाटा पड़िबो तो सेही जगह को जीवा को चेष्टा करंतु जोटी की पाख लोकटे जाई पारिबोनी कि जीवा को भाबी पारिबोनी जेलस तो लोक करिवे हां कि नहीं एंड इट इज ऑल अबाउट स्ट्रगल एंड मु सब बेले कोए कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल जेते थर होइचंती विफलता जेते थर पाइचंती से सब सक्सेस रो गोटे गोटे पार्ट एंड सक्सेस हैज नो मीनिंग विदाउट फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस यू एक्सेप्ट इट नो इट इज अ स्ट्रगल इटा दुख नुहे इटा कष्ट नुहे इटा अपन स्ट्रगल करूचंती स्ट्रगल रो अर्थ
जार एंड टा गोटे पॉजिटिव सेटा हला स्ट्रगल। गोटे स्टूडेंट मोर अछि जे मो क्लास रे करूतिला एप्लिकेशन क्लास रे से क्लास करूतिला से बहुत जिंस डिस्कशन कला परे मते कहला बहुत समय पर पता लगे सर कैंसर पेशेंट कोन करि परिबे ये करि परिबे प्रिपेयर हे परिबे परीक्षा दे परिबे हला कहला सर कैंसर पेशेंट प्रिपेयर हे परिबे परीक्षा दे परिबे ओसीएस परीक्षा मुगला रे एते कथा काहे कि भाबुछ से को मेडिकल टेस्ट हुए से देखा जाए मु भाबिली बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी से पिला मते पचारुछि कि कैंसर पेशेंट ओसीएस परीक्षा दे परिबे कि नहीं बट मु लाइटली नेली कथाटा को एते सीरियसली नेली तापर से मते नेक्स्ट रिप्लाई करछि कि सर मु टाइप 2 सॉरी स्टेज 2 कैंसर हे जाइछि एंड स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग भाबिले स्टेज 2 कैंसर हे सारिछि स्टिल द पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भाई पर्सन डेडिकेशन देखि परछन्ती को टाइप रो स्ट्रगल को से एक्सेप्ट करिछि बुझि परछन्ती को टाइप रो स्ट्रगल को से ऑलरेडी एक्सेप्ट कर सारिछि त लाइफ रे भाबिले सो लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी ओपीएससी देयर इज अ बिग वर्ल्ड बियॉन्ड यूपीएससी एंड ओपीएससी स्ट्रगल करिवाटा कष्ट देखा जाए बट एक्चुअली कष्ट नुहे दैट विल whenever you are feeling pain now you make sure कि you are in the right track जेतेबेले आपन को पेन फील होउची सेतेबेले आपन जानिबे कि आपन राइट ट्रैक रे अछन कोन कहल जेतेबेले पेन फील होउची सेतेबेले जानिबे आपन राइट ट्रैक रे अछन जब पेन होनी नो पेन नो गेन सिंपल फार्मूला इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन सो से जिनसो दूरे रहतु जी आपण प्रिपेरेसन पचर हिंड्रांस प्रिपेरेसन प्रॉब्लम कौन जदि आम सब स्टूडेंट मानकर इश्यूज देखा प्रिपेरेसन प्रॉब्लम कौन मत कहले प्रिपेरेसन जो मैंने क्वालिफाई कहीं करना प्रथम देखो फॉर व्हाट कंडीशन तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल कंडीशन दैट पार्ट आई एग्री हाँ कि नहीं फर्स्ट पार्ट इज फाइनेंशियल कंडीशन पाखरे पैसा नहीं जानते केते पिला प्रिपेरेसन कर कटक भुवनेश्वर रे से माने पूरा मास जाक प्रत्येक दिन रात खाली चूड़ा खाई सब रोच मुड़ी खाई रोच पैसा नहीं पाखर मागी पारना घरे कहीं ना बयस हो गला जदि पैसा मागे घर को ताले टाईटा पूरा शुणा पड़ो कमेंट दीटा शुणा पड़ो से खाली पेटर रोच 5 टंकार जो आहार मिल अच्छे से लाइन लगे खाऊँ मंदिर में जो मिलूँ लगुच लंगर लगुच से खाऊँ बट पैसा मागे साहस करना कहीं बिकज कहीं साथ देवेनि कहीं पाखरे छेड़ा हेनी कहीं सपोर्ट करेनि कहीं कोऑपरेट करेनि रादर दीटा कमेंट करेंगे केते बयस है किसी कर पारानी ना याठू बड़ मोटिवेशन कौन अच्छे मत कहले isn't it a factor of motivation for you to prepare इटा कौन फैक्टर ऑफ मोटिवेशन नुहे के दिन सोशल फंक्शन नु दूरे रहिबे मैन इज अ सोशल एनिमल केबे ना केबे तो सोशल हवा को पड़िबो तो जो जगह को जीवे से माने कमेंट करिवे कलेक्टर बाबू आसी गले तहसीलदार मैडम आसी गले तो तांको तो उत्तर भी दबार अछि ना नहीं केबे ना केबे जो माने सपोर्ट करि ना थ्रू आउटडोर प्रिपरेशन तांको भी केबे ना केबे उत्तर दबार अछि कि नहीं तो एटा ही फैक्टर ऑफ मोटिवेशन पढ़िया पई आउ कोन फैक्टर ऑफ मोटिवेशन दरकार कोन पर्सनली कहूँ नाउ कम्युनिटी वाइज कहले देयर आर सो मेनी थिंग्स जोटा हम एथिक्स क्लास रे टेक अप करे आई कैन टॉक अबाउट दैट इन अ सेपरेट सेशन नाउ एबे कोन प्रॉब्लम होछ मते को नाउ reality is the best motivator whatever happening in your life that is the best motivator factor of motivation हिसाब से ही काम करियो हाँ कि नहीं ये जिनस गुड़ाक सोशियली सोशल रियलिटी कि नहीं या फेस कर नहीं समस्त प्रत्येक प्रिपरेशन कर कैंडिडेट फेस करथिबो एई गुडा ए जिंस गुडा तो जे पर्यंत आपण प्रिपरेशन छाड़ी नाहंती डरिकी से पर्यंत यू आर इन द राइट ट्रैक गोटे वारियर केबे कोन छाड़ी दिए युद्धभूमि कोन योद्धा केबे कोन युद्धभूमि छाड़ी दिए तार मृत्यु न हवा पर्यंत तो यार एंड होची ये जो स्ट्रगल करूछंदी आपण माने यार एंड होची सक्सेस जैसे सक्सेस पाकर पहुंचे गले स्ट्रगल करिया पड़ियो बिना स्ट्रगल ले सक्सेस पाई परिबेनी तो पढ़ंतु मन देकी डिस्ट्रैक्शन टू दूरे की रुहंतु डिस्ट्रैक्टेड पीपल एमान को दूरे की रुहंतु डिस्ट्रैक्टेड मटेरियल रिसोर्स टू भी दूरे की रुहंतु स्पेशली बहुत लोग अछंती जो माने चाहंती हमें फेल हो हम लाइफ जो माने चाहती कि आमे कांदू जो माने चाहती कि आमे जाऊ ताको पक्कू एवं सबमिसिव हो जाऊ कि मो जीवन में मु किछि करि पानी प्लीज हेल्प मी आउट
तो एटी मुंड नुआइबार नहीं यही जगह निजक छोट करिकी निजर कॉन्फिडेंस लेवल को लो करिकी सबमिसिव हबार नहीं एटी राइज करिवार अछि ना यू हैव द पोटेंशियल हाँ कि नहीं now that part I agree Sivasis जोटा कहूच कि there are people those who are preparing for last 6 to 8 years still there is wastage of everything एवं सेमाने किछि करि पन्ना काहे कि ना सेमाने ना केबे तांगर SWOT एनालिसिस करना स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस सेमाने केबे करना सेमाने मापि ना निजर स्ट्रेंथ कोन वीकनेस कोन अपॉर्चुनिटी कोन थ्रेट कोन you find out what is your strength you find out what is your weakness first कोटी कमी रोचे सेटा तो देखंतु तापर डेवलप करिवे खाली परीक्षा दे चलले कोन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू साइकिल भीतर पढंतुनी ताटू बाहर को आसंतु प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू साइकिल रो बाहर को आसिया पड़ियो प्रिपरेशन करिया पर बुझुची एनीवे पुनी हम डिस्कशन करिवा नेक्स्ट क्लास रे नाउ दिस इज फॉर betterment of your mental conditioning ପାଇଁ କହିଲି ହେଲା so summary is properly पढंतु माइंड सेटअप करंतु कोठी टाइम वेस्ट करियो न करियो से विषय भाबंतु नाउ नो वन विल बी रेस्पोंसिबल फॉर योर लाइफ आफ्टर ऑल यू विल बी रेस्पोंसिबल वंस यू क्रॉस द एज लिमिट देयर इज नो वन टू गिव द सपोर्टिव हैंड की सपोर्टिव हैंड देबेनी की सपोर्ट करिवेनी निज लाइफ निजर यू हैव टू टेक द डिसीजन इफ यू क्रैक परीक्षा क्वालिफाई करिगला खाली तहसीलदार हबो बीडीओ हबो कलेक्टर हबो तापर समस्त आसी जिवे कहली ऑलरेडी कि सक्सेस हैज मेनी क्लेमेंट्स बट फेल्योर इज ऑलवेज ऑर्फन फेल्योर और रेस्पोंसिबिलिटी नबा कहि आसीबे सो यू टेक द रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ योर फेल्योर बुझिला ये क्लास रो पीडीएफ अवेलेबल अछि टेलीग्राम चैनल यू कैन टेक इट आउट नहीं परिवे समस्त एनीवे पढ़िले आज अनेक गुटे क्वेश्चन डिस्कस कले पुणी नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि क्वेश्चन एमति डिस्कस करिवे बट प्लीज रिमेंबर दिस एंटायर प्रिपरेशन इज क्वाइट now the entire preparation is struggleful preparation is difficult it easy हेतले समस्त हे जायथान सिविल सर्वेंट कष्ट किंतु इम्पॉसिबल नुहे डिफिकल्ट पाथ इम्पॉसिबल नुहे क्वालिफाई करि परिबे जेमती आज क्लास करछो सेमती 10 वर्ष हला मु देखि आछी एई बळिया पिला क्लास करछन्ती एमती क्वेश्चन करछन्ती एमती डिमोटिवेटेड होउछन्ती सेही माने ही परीक्षा दोछन्ती सेही माने ही क्वालिफाई करछन्ती जदि सेमाने करि पाले ताले आपण काहे करि परिबेनी बुझछन्ती कि नहीं समस्त मेंटल कंडीशन ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स मेंटल कंडीशन सेम रिजल्ट बाहर पूर्व दिन पिला फोन करके नेक्स्ट प्रीलिम्स में प्रिपेयर होछन्ती बट रिजल्ट बाहर जाउछ एवं बहुत बढ़िया रैंक रखुछन्ती भाबिले सेमानकर कॉन्फिडेंस लेवल 0 थिला बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स वन कॉन्फिडेंस लेवल हाई हे गला बिकॉज़ दे क्वालिफाइड सो यू प्रिपेयर वेल गिव योर बेस्ट the rest is the almighty will give you the success जहाँ परिश्रम करथिबे तार फल भगवान दे देबे ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्लास रे पुणी डिस्कस करबा काली क्लास नाही मे बी संडे और मंडे पुणी ये क्लास कंटिन्यू हबो आइदर संडे और आई विल कंटिन्यू ऑन फ्रॉम मंडे एनी क्वेश्चन आज आउ किछ जदि पचारिबे कोन ना सब दिन तो इकोनॉमिक्स सॉल्व करछे गोटे थर एटलीस्ट नो द रियलिटी ऑफ लाइफ सब दिन तो इकोनॉमिक्स तो सब दिन पढुछे know the reality of life what is the reality and accept that reality know the reality feel the reality and accept the reality that is the biggest lesson in life ठीक अछि तो समरी क्लास रा आज कि डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट मानकठू दूर रे रहंतु जे आपन को ऑब्स्ट्रक्शन दोची आपन को गोल आड़ को जिबारे जे क्वालिफाई करिवारे एग्जाम ऑब्स्ट्रक्ट करूची से ही आपनकर वन एंड ओनली एनिमी जे आपन को सपोर्ट करूची आपन को गोल आड़ को जे एग्जाम क्वालिफाई करिया पई सपोर्ट करूची से ही फ्रेंड तो जे कोऑपरेट करूची तारी पाखर रहंतु से गोटे बही हेई पारे गोटे पर्सन हेई पारे ब्लड रिलेटिव हेई पारे नॉन ब्लड रिलेटिव हेई पारे टीचर हेई पारे जे हेल्प करूची मे बी अ पर्सन मे बी अ मटेरियल ता सहित रहंतु जे हेल्प करूनी जे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करूची एग्जाम क्वालिफाई करिवारे मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम हिम
ताटू गोटे डिस्टेंस मेंटेन करंतु टाइम रो प्रॉपर यूटिलाइज करंतु एग्जाम क्वालिफाई कर जे ठीक अछि दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू आज क्लास रे हम देखले हेल्थ एंड एजुकेशन सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हेल्थ एंड एजुकेशन है ना थैंक यू एवरीवन गुड नाइट